that today is the last day of Navratri and tomorrow is pious Dashera, and especially in the upcoming days, the festival of Sharad Purnima is arriving. So during the Katha, there will be many celebrations and festivities we are going to listen, and we will celebrate that as well. But the topic for this Katha will be Sharadiya Raas, that is the pure, pious, transcendental night of Ras Leela, when Lord Sri Krishna organized this Maha Ras, or the transcendental dance with the gopis of Raja. So to listen and understand Ras Leela is far beyond our comprehension and understanding, because it is a very pure and pious pastime. That is the But usually we have this thought that when are we going to listen to this and relish it? So this is a humble trial. I'm not sure how much we are going to listen, but behind that, what is the philosophy and what are the concealed secrets in these 7 days while celebrating all these festivities by the support of the Patel family? The We will try to understand with all humility the pastime of this Raslila. So you all from so many years have been listening to the Bhagavatam Katha. So we don't have to utilize time to make a foundation of Srimad Bhagavatam, as you all are aware. So if I enter directly to the 10th canto, you all might be aware, and if you're not aware, then you should know that the Rasa Leela has been mentioned in 5 chapters. And there is no difference between Bhagavatam and the Lord. And in Bhagavatam, the 10th canto, it's the heart of Lord Sri Krishna. So it is the heart of Krishna, that is the 10th canto of Srimad Bhagavatam. But this heart also cannot sustain or work till there is life and soul in it. So this whole Bhagavatam is the epitome or form of the Lord, and this 10th canto is the heart of Lord Shri Krishna. But to make it sustain, so for anything to work, it should have 5 souls or life airs. So these 5 chapters are the life airs of Lord Shri Krishna's heart. So all that description of Ras Leela, which we describe as Rasa Leela, these are the 5 life airs of Lord Shri Krishna. This is the heart of Lord Shri Krishna. So many years back, a saint said
that these 5 chapters of Rasa Leela, if someone recites it 1,000 times, just to recite it, so if someone just recites these verses 1,000 times, then he can win over this lust of sense gratification. Because of this sense gratification, we keep on burning and we always become desperate, anxious, and because of that, so many wars are fought and which brings destruction. So to get a victory over such lust and desires, you can win them over if you recite these 5 chapters for 1,000 times. So there are thousands of verses. I'm not sure whether I will be able to speak even properly on one verse, but I will just try by speaking, and you should try to listen. And I'm not, and this is my own family. Shruti Mataji, Paresh, their daughter and son. दूल्हे राजा कहाँ पर सो जय स्वागतम हमारा मैच वेलकम स्वागत सो अपना ही परिवार है श्रुति माता के विषय में मुझे कहना हो तो मैं बहुत सारा परिचय दे सकता हूँ If I have to say, then I can introduce Shruti Mataji, but the biggest introduction will be that she is a regular listener of our Amrit Chalcha program. So if someone is there or not, but Shruti Mataji is always there. So on this great pious time, this Katha has been organized. So on the second last or the last day, this is the time of Sharad Purnima, which is called as Raas Purnima. And on that occasion, in these 7 days, we will listen to the secrets of the pastimes of Rasa Leela. So if I tell you in one perspective, then to enter the Raas or to participate in Raas, so Gujaratis will just wear the appropriate dresses and just start dancing. So we have heard many times from the mouth of our Guru Maharaj, but today I'm going to try to speak because the philosophy behind this transcendental dance and what is this divine transcendental pastime we are going to try to understand. So in these 7 days we will have Raas. In your whole lifetime, you might not have heard about Raas that much that you're going to listen this time. So first and foremost, according to the sequence of Srimad Bhagavatam, there is an index in Srimad Bhagavatam. So the sequence of his pastimes is his birth and then the liberation of Putna, Trinavrat, etc. So he also might have kept it in a sequential or keeping in mind something. So according to this sequence, if we try to understand this, so before we read that point, all the pastimes that are there, we should try to understand those pastimes. So in other words, before the rasa dance, we should reach that stage. So the practitioner of devotional service, if doesn't have that kind of
stature of level of understanding, then you cannot understand. So I don't want to waste more time, as Shruti Mata has this desire that we should listen to something else new. So you heard so far that Krishna was born, and what did he give the message by the pastime of his birth? So there are so many things, but if we try to understand one point, then on the day of Janmashtami, we sing one bhajan regularly. And what is that bhajan? ए नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। सो नंद के घेर आनंद भयो। सो भगवान श्री कृष्ण जन्म के माध्यम से हम सबको Lord Shri Krishna, through the medium of his birth, he is teaching us how to live in ecstasy and happiness. Whether it is Lord Shri Krishna or Lord Shri Ram, when Lord Shri Ramji was born and Vashishji was called, then Dashrathji asked that look at his future and please name him, and Vashishji replies, आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते त्रिलोकयुपासी। सो सुख दाम राम असनामा। सो सुख दाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। राम जी का जब जन्म हुआ तो वशिष्ठ when Ramji was born, then Vashishji replied, सिंधु सुख राशि। Jo Anand Sindhu Sukurasi. Your son is the ocean of ecstasy, and all the happiness and ecstasy in this world is just a tiny droplet of him. So Ramji is the epitome of bliss, and Lord Shri Krishna is the bliss and ecstasy born in the home of Nand Baba. So he's trying to teach us how we should live. So whether people of this world would be anxious and distressed, but those who wear this kanthi and tilak, they should always be in mode of happiness. Why? Because if you desire Krishna or you love him, then whom does he, Lord Shri Krishna, connect? To whom does he get attracted? So he himself is epitome of bliss, and he is the blissful form, and he will get attracted to pleasure or ecstasy. So if you are happy, then Krishna would like to stay with you. And if you keep on crying, then
Even if he comes, he will just run away from there. सुख के सब साथी दुख का न कोई, कृष्ण भी नहीं। So even Krishna will तो leave हर you. बार मंदिर में जाकर रोते नहीं So रहना every time, चाहिए if कि you should not just keep on crying in the temple, you should always be in happiness कृष्ण को यदि अट्रैक्ट or in करना the है, mood of happiness. So कृष्ण को if you want to आकर्षित करना attract चाहते Krishna हैं, towards तो आनंद yourself, में रहो। आप जानते हो then you should stay भगवान श्री in कृष्ण happiness. चैतन्य महाप्रभु क्यों बने? You know कैसे why Krishna चैतन्य महाप्रभु बने ना? उसका came एक as a कारण ये form था of Chaitanya कि उन्होंने Mahaprabhu, and सोचा कि मैं the भगवान reason हूँ, being he thought मैं that I am ईश्वर the हूँ, Lord लेकिन मेरे से ज्यादा आनंद तो मेरे and डिवोटी लेते हैं। my devotees मेरे enjoy से ज्यादा more सुखी than तो me. ये मधुमंगल है, ये श्रीदाम सुदाम, Madhu ये Mangal, सखा, Shridam, ये राधा, ये my गोपी friends मेरे से ज्यादा Radha and all आनंदित these हैं। gopis, they are far more मतलब मैं तो happier घाटे than में me. चल रहा हूँ, अपना I बिजनेस am तो लॉस में चल रहा in है। loss. तब कृष्ण ने सोचा भगवान Then बनने से Krishna वो thought, आनंद नहीं मिल रहा जो भक्तों को by मिलता है, becoming the Lord myself, उनके मन I'm में, not getting the भगवान के pleasure. मन में So Krishna had भक्त this बनने का desire लोभ हो गया। that, and he got और this यही greed द्वापर युग के कृष्ण to become a इससे devotee of the Lord. And 500 that is वर्ष why पूर्व in Kali श्री Yuga, चैतन्य महाप्रभु 525 हुआ years back, करते, he भक्ति came करने as आए Chaitanya और Mahaprabhu, अपनी ही भक्ति का आनंद लिए। and he took the pleasure सो or enjoyed the pleasure of देखिए his own मंत्र के devotional सबसे service. पहले कृष्ण ने जन्म के माध्यम से So, first and हम foremost, सबको by the medium आनंद of में his रहना सिखाया। pastime of his birth, he taught us how और to मैं be ये कह in रहा था, bliss and दुनिया के लोग happiness. भले दुखी रहे, And whether डिवोटी the को world of the आनंद people में रहना might be चाहिए। distressed or माया anxious, दास but a उदास, devotee कृष्ण दास should देवदास, always अपनी be हानि in का a भोग, happier आपका mood. कौन ही चिंता, हाँ? Why should we रक्षा worry? करने वाला, हाँ? There is Lord to यहाँ protect रखने us. वाला हजारों भुजा He वाला is there बैठा to हो, take care, तो who भक्त has क्यों thousands of चिंता hands. So करेगा, why we should be जो worried? आनंद में रहे, So we should always क्योंकि be जितना in आनंद में bliss. रहेंगे उतने भगवान More we आकर्षित enjoy, होंगे। the more the Lord और will be डिवोटी attracted में towards भी, us. और जिस डिवोटी को And in मुंह मिजाज devotees बनाए also, बनाए रहो, यहाँ if जितने you भी लोग बैठे हैं आप wa- लोग तो आनंद में रहो, want हाँ? to क्योंकि सब be बीच बीच in में a बदमाश हैं, bad mood, then एकदम they can आपका stay. समय But निकल all जाएगा, who are here, they should be in a सब happier आनंद mood. में, Everybody should be हाँ? in a blissful mood. रामायण में वर्णन है ना, In the जब Ramayana, शिव there जी is a mention कैलाश से उतर कर कुंभज ऋषि के पास गए, when और Shivji कुंभज came ऋषि ने to जब Kumbhaj कथा Rishi सुनाई, from राम Kailash, कथा मुनि and वर्ज when बखानी, Kumbhaj Rishi ये spoke the रामायण के pastimes of प्रारंभ में Lord Sri वर्णन है Ram, कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख and it पाए। is mentioned in Ramayana उसमें भी राम that कथा, कृष्ण after कथा listening सुनकर to तो this pastime, Lord शिव जैसे Shiva शिव भी परम आनंद में हो गए। became extremely और जब शिव जी blissful, आनंद में हुए तो satisfied, and तुरंत happy. राम जी का दर्शन And हुआ, immediately है he ना? got an तो दुखी personal होकर audience उतना with Lord Sri दर्शन नहीं Ram. होता जितना सुखी होकर होता है। एक So और when we are दूसरा happier, then we will have a personal एक audience with the भक्त Lord को, soon. एक डिवोटी को And a आनंद में devotee इसलिए रहना चाहिए should always क्योंकि be एक in भक्त का blissful mood, आनंद में रहना ये अपने because आप में ही एक प्रचार है। it जब itself is a कश्मीरी form of धोती preaching कुर्ते वाले आनंद में that रहेंगे all तो those लोग who सोचेंगे are कि यार wearing dhoti kurta हमें भी tilak, भक्ति if करनी they are चाहिए। in happier लेकिन mood, भक्त then लोग people will get दूसरों को inspired that देखते रहेंगे, we should also जो perform. लोग We should सोच रहे हैं also ना कि perform हम devotional service. भक्ति So करेंगे वो भी if दूर we चले जाएंगे। always are इसलिए भक्त in को a fall आनंद में mood, रहना then चाहिए। people will run away. सो So we should कृष्ण always ने be अपनी in a जन्म blissful लीला mood. से And through his भक्तों को pastimes, आनंद में Krishna रहना himself has सिखाया taught how to कि live in भक्तों को bliss and आनंद में रहना ecstasy. चाहिए। उसके बाद क्रम के After अनुसार that, मैं अवस्था आपको बताऊं तो let दूसरी me लीला share the थी sequence, पूतना the मोक्ष लीला। pastime. Then that was पूतना Putna, मोक्ष moksha, पूतना liberation. उद्धार करके कृष्ण ने So व्रजवासियों by का doing that, संशय दूर कर दिया। he removed the पिछले doubt from the कार्यक्रम में hearts हुआ था of ब्रजवासियों को the कंसों denizens के of प्रति, Braja. ब्रज के प्रति, कंस के प्रति, असुरों के प्रति अनेकों संशय थे। So they all had लेकिन उस 6 doubts. दिन के बालक कृष्ण ने, But this वो 6-day बालक old केवल 6 child, दिन के लड़के Krishna, ने जब पूतना को मार दिया when तो killed सारे Putana, ब्रजवासियों का संशय दूर हो गया। तो then दूसरा all पूतना these मोक्ष करके कृष्ण ने residents of इस Braja are लीला के gone, माध्यम से संशय को दूर करने their लगा है। anxiety removed. So, देखिए भगवान श्री कृष्ण गीता में and they कहते had हैं no doubt. So, कि
In the pastime of this, इस दुनिया में जो Krishna tells that जिसके पास or संशय है, conveys us that a जिसके person पास who is में in doubt संशय है, in वो his heart and कभी mind, सुखी नहीं हो सकता। he will never be happy. और जिसके सारे संशय दूर हो गए And हैं, those who don't have any वो doubt परम or सुखी whose हो सकता है। doubts भगवत have been गीता का removed, श्लोक मैं he आपको will देता be हूँ। extremely वो happy. कहते हैं So, श्रद्धा if I वाले share this भवते ज्ञानम, verse from शुद्ध Bhagavad गीता Gita, के चौथे अध्याय का this is 39 from the नंबर का fourth श्लोक है chapter and third कि verse, श्रद्धा से जब हम that with ज्ञान प्राप्त firm करते हैं, faith, if we acquire हम knowledge अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते and हैं, we control our ज्ञानम senses, लब्धवा, हे अर्जुन, उस Jnanam ज्ञान Labdhava, को hey, प्राप्त O करके Arjuna, by परम acquiring that शांतिम knowledge, अभिगच्छति, Param परम Shantim शांति प्राप्त हो जाती Adhigachati, है। we will get सो ज्ञान extreme से शांति happiness आती or है। peace. हम्म? क्योंकि So ज्ञान by प्राप्त knowledge we करने से can सारे acquire संशय patience दूर होते or हैं, और peace संशय दूर हो because गए all our तो doubts are शांति आ cleared, and जाएगी। when our doubts are cleared, we will इसलिए be at peace. संशय से मुक्त होना Therefore, जरूरी है। we should always आ, आ, be आ, away आपको कोई from the कहे यहाँ doubts. पर, ये जो वो प्रभु जी को आप देख रहे हो ना, वो जो बैठे हैं, वो So, भले यहाँ पर धोती कुर्ता डाल के बैठे हैं, so all लेकिन the हम उसके बारे में सब जानते हैं। Prabhuji who is hearing बस Dhoti इतना Kurta, इतना संशय आ गया ना, आपको रात को नींद नहीं we आएगी। know about अरे यार वो who he कैसा is or how he behaves. होगा, So if कहीं he मेरे has बारे this में किसी को बता doubt, नहीं देगा। then we'll have a संशय। doubt that whether he will speak तो something आगे about भगवत me. So गीता there में will be a doubt. कृष्ण कहते हैं So further in Bhagavad Gita, कि Lord Shri Krishna अश्रद्धया adds, नश्यति, a Shraddha संशयी आत्मा विनश्यति। Sanshay Atma यदि मन में Vinashyati. किसी भी प्रकार का If you have संशय है, खास करके any kind भगवान of के प्रति doubt, और अपने प्रिय जनों के प्रति, especially जब in तक मन में reference संशय है, to the Lord ये or संशय your आपका beloveds, विनाश then तक करा देगा। it और इसका can ज्वलंत destroy प्रमाण you. शिव जी And की the live पत्नी से example is the रामायण wife की of बात Lord है। Shiva in सती सीता Ramayana. जी में संशय हुआ, Sati उसी got दिन में उनकी doubt on मृत्यु Lord हो Sri Ram, गई। and सो in few संशयी days she आत्मा lost her विनश्यति। life or और संशय जिसके मन में left her होता है, body. दूसरी लाइन में, न लोकोस्ति न परो सुखम, संशय करने वाले को इस So those जीते who जी are in इस doubt, दुनिया में भी सुख नहीं मिलता, they will और not feel मरने के बाद happy in भी this सुख नहीं world, मिलता। and even beyond that, after death सो as well, they will be distressed. संशय से So मुक्त होना therefore, जरूरी है। we should और always try to संशय get कैसे rid दूर of होंगे? doubt. And how are we going to get rid संशय of को these दूर doubts? करने के लिए क्या करें? So what shall we do for संशय the दूर same? करने के लिए किसी गुरु के चरणों में बैठकर We should sit भगवत at, so to कथा speak, of सुने। a spiritual master, and we should listen to the pastimes ये of the Lord. इतिहास आप सब लोग जानते हैं। You all are महाभारत के aware of युद्ध the के प्रारंभ में famous अर्जुन pastimes को संशय हुआ। during the start of अर्जुन के this मन में war बड़ा of संशय हुआ, Kurukshetra. Arjuna हम got कांप so गए, much मुंह anxiety सूख and गया, doubt. चक्कर आने लगे, He गांडीव lost his हाथ से confidence. टूट गया। His लेकिन gandi जब fell अर्जुन from को his hands. संशय He was हुआ, sweating तब भगवान profusely. श्री कृष्ण And ने when he गीता got का this doubt, ज्ञान दिया। he took the shelter of और Lord गीता Krishna सुनाकर and got कृष्ण the ने कहा, transcendental अर्जुन knowledge by the Lord कैसा लग himself. रहा है? And तब then अर्जुन the ने Lord कहा, asked, नष्ट how मोह are you feeling? स्मृति And लब्ध्वा। Arjuna says, कृष्ण ये Nashtamo ज्ञान सुनकर, गीता Smriti सुनकर Labdava. मेरा By मोह getting नष्ट this हो गया, knowledge, मुझे समाधि my हो गई, attachment सारा has been संशय दूर हो destroyed. गया। All my doubts तब are मुझे cleared. समझ में I'm आया, crystal clear in my vision. जिस गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु सवार होते The हैं, उस Garud, गरुड़ the को भी carrier एक of बार Lord Shri संशय हो Krishna, गया। he संशय also सबको got हो सकता है। distressed or had भगवान a के doubt, वाहन and गरुड़ को संशय everybody हुआ, can get तब a भगवान doubt. ने उसे So काक when भूषण जी को भेज Garuji दिया, had this doubt, he was sent to और काकभूषण Kakbhushandi, जी ने राम कथा सुनाई and then और he कहा, spoke the गरुड़ pastimes जी of कैसा Lord Shri लग रहा Ram. है? And then तब he गरुड़ जी asked, ने भी यही how do कहा you था, feel now? मिटा And मोह Garuji सब replied, ताकत भारी। मेरा सारा मोह मिट गया, संशय all मुझे my दूर हो गया, attachments have been और destroyed. सारी चिंता दूर हो गई। All my distress and doubts have been तो cleared. संशय को मिटाने के लिए So कृष्ण to जी get का rid राम of कथा these एक doubts, we should listen ताबूत to the समान, pastimes of खिड़की के Lord समान Shri है। Ram जैसे आपके or दरवाजे के, Krishna. आपके घर की खिड़की पर यदि So कोई as the कबूतर आकर बैठे, कबूतर तो if नहीं at the आएगा, home of कौवा a आता window है, there is कोई भी a पक्षी आकर pigeon बैठ जाए or a और crow उस or पक्षी any को bird, उड़ाना चाहते हो, तो and you उसे want लकड़ी दो him तो ठीक नहीं है, to, पत्थर मारो ये भी ठीक नहीं है, गोली if मारो if ये you भी want ठीक him नहीं to है। go, then तो उसे उड़ाने either के you लिए can सरल उपाय
abuse him or throw a stone, that is not appropriate. But if you just clap your hands, the bird will fly. So the bird of doubt that is in our heart, that can be removed by just clapping our fingers with this pastime of the Lord. It is said, करतारी हे राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ाव निहारी संशय विहंग उड़ाव निहारी। सो कृष्ण की दूसरी लीला हुई पूतना so मोक्ष। the second pastime of Krishna was the liberation of Putna, and by which he demonstrates that we should get rid of all the चाहिए कथाएं सुन सुन कर श्रवण कर करके सारे संशयों से मुक्त we हो should जाना चाहिए। try to remove all the doubts from our heart. And in the third pastime of Lord Shri Krishna, in the third month was Trinavrat Leela. In this proclivity, what did Krishna do? In Braj Vrindavan, he relieved them of three things. Trinavrat came with three things. You all have heard about this earlier. When Trinavrat came to kill Krishna, so he came with a trin or a grass blade and dust, and he had made the sky dark. He brought darkness with him. So all these three things are three material nature of this material world. So this trin or blade of grass is satogun or mode of goodness. Then dust is mode of passion, and darkness is the mode of ignorance. So by killing Trinavrit, Krishna has given us the the philosophy that we need to get rid of all these three modes of material nature. So you might say that this is very hard because the world in which we reside, everything is a deformation of these three qualities of material nature. So whatever you see in this world, they all come under this material mode of nature, whether it is in the mode of passion, goodness, or ignorance. But Krishna gave a very, very easier solution that all these things, if you offer it to Lord Shri Krishna, then they rise above three modes of material nature. If you go and get something from the shop and eat, then you're eating sin. And that is in the mode of ignorance. But if you offer the same to the Lord and eat it as prasad, then it becomes transcendental, which is beyond the three modes of material nature. It will cleanse and purify our heart and soul. So the things of this world all fall under the category of these three modes of nature. But if we offer it to the Lord, then they become beyond these three modes. And after that, what was the pastime? That was the naming ceremony of Lord Sri Krishna. And by that, he demonstrated that we should have firm faith in the names of the Lord. So it's Raas Leela is not just taking the dandiya and entering the Ras. First, we should always be in bliss, and gradually we have to rise. So this is like a checklist. First stage, second stage. So we cannot miss any stage in these. First and foremost, we should know how to live in pleasure and ecstasy. And by listening to pastimes of the Lord, we should be clear of our doubts. And after that, we should try to rise above the three modes of material nature. We should establish ourselves in the pure goodness. And then there should be allegiance towards the holy names of the Lord.
And all the devotees get up early in the morning and gather together to chant the holy names of the Lord. That is their allegiance towards the holy names. As you have faith in the holy names of the Lord and you start chanting, sometimes people say, we cannot focus or concentrate on chanting the name. We take the names of the Lord, but we are not able to focus. Uh, it's, it doesn't matter whether we are able to focus, it's good. If not, then also it's okay. But by this naming ceremony, the pastime of Krishna is, the next pastime is, if you have Makhan Chori Leela. So what is this Makhan? It is the essence of the milk. And our essence of our body is our heart. So Krishna took the essence of the milk, that is the butter, and when we chant the holy names of the Lord with allegiance, then the Lord will steal the essence of our self, that is our heart. He will steal our heart. So in all the other processes like Gyan Marg, Karma Marg, etc., a practitioner has to work hard. We have to the practitioner has to focus himself. But in the path of devotional service, what is the benefit? A practitioner tries his level, but the Lord also reciprocates and helps us, and He gets so much attractive to us, and He starts stealing. You might have realized that in Braja, Gopis never used to call Krishna without even an invitation. Lord used to enter the homes of these gopis and steal the butter. So we should not be worried that whether we are able to focus our heart and mind towards the Lord. But if we have allegiance to the holy names of the Lord, then the Lord will steal our hearts. So by this pastime of stealing the butter, He has taught us that if we have allegiance, firm faith towards the holy names of the Lord, then He will steal our heart. So, what can you consider as the biggest robbery of a? Sometimes people are robbed of their money and car, etc. I went to Mumbai 2 months back. I parked my car below and went up. When I came back, somebody stole all the four tires. So people even steal the tires of the car. Doctors steal the kidneys of the patients. Yesterday, someone was saying, doctor said, you will have to change your kidney. He said, how much I will get for kidney? नई किडनी इतने की है तो पुरानी का कितना रिटर्न कितना आएगा खैर तो मैं ये कह रहा Anyways, I was saying, what is the greatest robbery? If someone steals your money, it is not that much loss. The greatest theft is of the robbery of your heart. I just want to caution all of you. The people of this material world steal, then we should not be that much worried. But they should not steal our hearts. We should always be careful about that, because it is the greatest asset we have. The people of this world should not steal our heart, because it is for our Madhav to steal. So if someone takes some money and they free our heart, that is a great deal. We should give our heart to Madhav.
In this past tense, Krishna hasn't asked anything. He has only asked for our heart. He repeatedly said, Man mana man mad bhakto. So I'm giving you the sequence. If you have faith in the names of the Lord, then the Lord will steal our heart. And after that, what is the past tense? Gocharan Leela. That is, he went to raise the cows. So go means the senses. Our senses are also called go. And if we serve the Lord, then our life is run by Lord Shri Krishna. And when we work for Krishna, then he works for us. And we have the greatest example from Junagadh. If Narsi is busy singing the glories of the Lord, then Krishna arranges the veneration oblation of his father. So, by this Gauchana Leela, he gives this message that you should serve me as I guide the cows by playing my flute and control them. Similarly, I will control your senses as well. And further, there is another pastime that is Kaliya Daman. So, what does Kaliya Daman implies? We all have lust in our heart. In one sense, we all are focused or entangled, engrossed in sense gratification. We are born because of that, and when we leave our body, still we are filled with so many desires. So, in essence, our body is totally dependent on lust or desires. But the Lord liberated this Kaliya. Similarly, he can remove all the our desires. So Krishna jumped in Yamunaji, and where did he used to reside? This Kaliya used to reside in the center of Yamunaji. And where does this lustful desires reside? They are in deep in our heart. So they all arise from our heart. So by jumping in Yamunaji, he controlled Kaliya. Similarly, when we perform devotional service towards the Lord and keep on chanting the holy names of the Lord, then the Lord will come in our heart and he will remove all our desires. And for the greatest example is Dhruv Maharaj's 5-year-old child had so many desires. But when he performed devotional service towards the Lord, all his desires were removed by the Lord himself. He became liberated of all the desires. There is this pastime of Shirharan. This is the times of Navratri. And you have heard the pastime previously. So the gopis, for whole 1 month, have venerated Katyani Devi. And as a result of that, Lord Shri Krishna became extremely satisfied and happy. And he stole their clothes. So it implies Krishna wants to convey this message that I will free yourself from this material thing. As I have stolen their clothes, I will steal all the material engagement and entanglement. And after that is the pastime of Govardhan. So Go means Ardha, the senses, and Vardhan is beyond the senses. So, so that implies by Govardhan Lila he says after this, after removing yourself from the material engagement or attachment, then there is one thing.
then you will get free or liberated of this material entanglements. And when we rise above from this material platform to the spiritual platform, then there will be Rasa Leela. So after Govardhan Leela, there is Rasa Leela. So there are so many things we will listen. But according to this sequence of the proclivities of the Lord, then to want to participate in Rasa Leela, we have to rise above from the level of material body to the spiritual level. So we just get ready and we go and enjoy the Garbha, etc. But that is all on the platform of the body, to decorate the body. And then, but the transcendental Ras is, for that we have to rise above the material senses. And after that, only the foundation of this pastime will be formed. So, to participate in this proclivity, first and foremost, we should always be in blissful mood. We should learn to be happy. Secondly, we should be always devoid of doubts. Then we have to rise above the three modes of material nature, and after that, we should have allegiance towards the holy names of the Lord. And after that, we should focus our heart towards the Lord. We should have perform devotional service. And then all these lustful desires should be removed from our heart. And we need to get rid of the material nature and go beyond them. And then when we rise above the spiritual platform from this material platform, then only we can enter into the Ras. In this manner, we are going to reveal the pastimes of the Rasa Leela. So before that, let's listen, do some congregational chanting. But as this is Sharad Purnima, so we will do it according to Rasa. So there are many Ras Kirtans. So, and if you desire, then you all can stand dancing. You all should stand and participate if you desire. And then we will re-enter in this pastime. So with love and devotion, we should. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राधे मेरी स्वामिनी अन में राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी अन में राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी अन कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है
सो तेरो आधी ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करी बेहाला नंद लाला लागी तन ज्वाला विपत विशाला दिन दयाला नंद लाला आये नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसीवाला ने बनवारी नर सुखकारी मित्र मुरारी गए विसारी गिरिधारी रे जी गए विसारी गिरिधारी रे जी गए विसारी ताऊ हतुर दाव डमकत कहकत मोर मलाल गिरा तब पियू पियू शब्द पुकारत चातक पियू पियू कोकिल कंठ गिरा तब गड़ड़ गड़ड़ नव होत कड़ा कन गण गणन गिरिवर शिखर ध्रुजे गण रण पट भरड़ भरड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जी रंग भर सुंदर श्याम रमे काना ने नोतरू दीदू रे गोपी बान भूली गई काना ने काना ने नोतरू दीदू रे गोपी बान भूली गई बान भूली गई ने गोपी बान भूली गई काना ने नोतरू दीदू रे काना ने नोतरू दीदू सवारे उठी नावा बैठी दातण भूली गई सवारे उठी नावा बैठी दातण भूली गई खंभे नाखी साड़ी गोपी खंभे नाखी साड़ी गोपी पानी भरवा गई काना ने नोतरू दीदू काना ने नोतरू दीदू रे गोपी बान भूली गई काना ने बान भूली गई ने गोपी बान भूली गई काना ने त्रण त्रण बेड़ा लईने गोपी पानी भरवा गई त्रण त्रण बेड़ा लईने गोपी पानी भरवा गई खाली बेड़ा लईने आवी खाली बेड़ा लईने आवी भरेला भूली गई काना ने काना ने नोतरू दीदू रे गोपी बान भूली गई
ભાન ભૂલી ગઈ ને ગોપી ભાન ભૂલી ગઈ કાનાને ખોબો ભરીને મીઠું નાખ્યું ખીર કારી થઈ ખોબો ભરીને મીઠું નાખ્યું ખીર ખારી થઈ હા ખોબો ભરીને મીઠું નાખ્યું ખીર કારી થઈ ખોબો ભરીને મીઠું નાખ્યું ખીર ખારી થઈ પૂરી વણીને તૈયાર કરી પૂરી વણીને તૈયાર કરી પૂરી વણીને તૈયાર કરી પૂરી વણીને તૈયાર કરી તળતા ભૂલી ગઈ કાનાને કાનાને નોતરું દીધું રે ગોપી પાન ભૂલી ગઈ કાનાને એ ભાન ભૂલી ગઈ ને ગોપી ભાન ભૂલી ગઈ કાનાને વાલો મારો જમવા બેઠો આસન ભૂલી ગઈ 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 પાટલા ઉપર પીરસી આવી પાટલા ઉપર પીરસી આવી પાટલા ઉપર પીરસી આવી પાટલા ઉપર પીરસી આવી થાળી ભૂલી ગઈ કાનાને કાનાને નોતરું દીધું રે ગોપી પાન ભૂલી ગઈ કાનાને એ ભાન ભૂલી ગઈ ને ગોપી પાન ભૂલી ગઈ કાનાને કાના પેલા જમવા લાગી વિવેક ભૂલી ગઈ 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 જમી પરવારી પૂછવા લાગી જમી પરવારી પૂછવા લાગી જમી પરવારી પૂછવા લાગી જમી પરવારી પૂછવા લાગી એ રસોઈ કેવી થઈ કાનાને કાનાને નોતરું દીધું રે ગોપી પાન ભૂલી ગઈ કાનાને ભાન ભૂલી ગઈ ને ગોપી ભાન ભૂલી ગઈ કાનાને કાનો મારો હસીને બોલ્યો હાથમાં તાળી દઈ કાનો મારો હસીને બોલ્યો હાથમાં તાળી દઈ હા કાનો મારો હસીને બોલ્યો હાથમાં તાળી દઈ કાનો મારો હસીને બોલ્યો હાથમાં તાળી દઈ તે રાધાજી તો રોજ જમાડે રાધાજી તો રોજ જમાડે તે રાધાજી તો રોજ જમાડે રાધાજી તો રોજ જમાડે એ તારી જેવી નહીં કાનાને કાનાને નોતરું દીધું રે ગોપી પાન ભૂલી ગઈ કાનાને નોતરું દીધું રે ગોપી પાન ભૂલી ગઈ હો શ્યામ
રાધિકે સાદ કરીને તમને હું બોલાવું, આવો તો હું હરખાવું, મારા હૈયાથી લગાડું, મારા હૈયાથી લગાડું. હો શ્યામ રે હો શ્યામ રે મને લોકડિયાની લાજો બહુ આવે, મારી સાસુડી સતાવે, મારી નણંદી મેરા મારે, મારી નણંદી મેરા મારે. હો રાધિકે હો રાધિકે લોકડિયાની લાજુ મેલી આવો, બોલાવે તમને માવો, મારી સંગે રાસ રચાવો, મારી સંગે રાસ રચાવો. હો શ્યામ રે હો શ્યામ રે તમ સંગાથે ગોપવાળો જા જા, તમે મેલો ના હવે માજા, મારા રુદિયાના છો રાજા, મારા રુદિયાના છો રાજા. હો રાધિકે હો રાધિકે રઢિયાળિયા જામી છે રાતલડી, કહેવી તમને વાતલડી, તમે ફેરો નાયા ખલડી, તમે ફેરો નાયા ખલડી. હો શ્યામ રે હો શ્યામ રે આમાં જમરાતે મોરલી વગાડી, મને નીંદરથી જગાડી, મને માયા તે લગાડી, મને માયા તે લગાડી, માયા તે લગાડી, મને લગાડી, મને હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે રામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે
राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे Radha Govinda, Radha जय श्री राधा गोविंद Govinda, Radhe. जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ Baladeva Jaya Subhadra. गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय Gauranitai Jaya Gauranitai, Gauranitai Jaya Gauranitai. प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की श्री गौर निताय की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की क्या नाचते हो आप। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी
पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले Hare Krishna. कथा रसिक I welcome all the loving devotees of Srimad Bhagavatam. दूर दूर से देश I विदेश also के welcome समस्त with आधुनिक all of you who have joined through the medium of electronic devices, एवं and ये सुंदर the organizers of this भागवत beautiful का Katha. आयोजन करने वाले, वैसे तो अहमदाबाद निवासी, Although they are residents of शिकागो Ahmedabad निवासी, and Chicago presently, समग्र पटेल the whole परिवार, Patel family. इन परिवार के पूर्वजों का स्मरण करें। So if we remember their ancestors, गंगाबेन, Sri Gangaben, नंदू भाई पटेल, कोकिलाबेन और श्रुजल पटेल, and Shrujal Patel, ऐसे पावन पूर्वजों की स्मृति में so in the reverie ये of सुंदर such कथा pious का ancestors, आयोजन करने the वाले organizers of this beautiful श्री Katha, भिखू भाई, Sri Bhikkhu Bhai लीलाबेन, and Leela Ben, मयंक, अनीता, Mayank, Anita, પરેશ ભાઈ Paresh Bhai અને અમારા ઈનાઈ શ્રુતિ માતા, and Shruti Mataji, નિમેશ, નિધિ, Mesh, નીલમ, Nidhi, Neelam, विनीत कुमार और Vinit सभी बाल Kumar, गोपाल, and श्री all हरि, the श्री राज, kids in the श्री family. जनिता, आप सभी भक्तों का I welcome you आप all, सब समय निकाल कर आए हैं, बड़े that you busy all हैं have आप सब। taken time from your busy life. आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के I welcome you all प्रथम दिवस में on the first day of the पुनः एक Srimad बार Bhagavatam Katha. हार्दिक स्वागत Welcome एवं back, and आप सबके चरणों please में accept हमारा our humble obeisances at your lotus feet. राधे श्याम। Radhe Shyam. ये विवाह किसका है, जरा So इनको whose पिन marriage is कीजिए। this? So just pin क्या them. नाम है? शौर्य, आपका शौर्य नाम से तुम्हारा? शौर्य ने जनिता, हाँ। And Janita. तो कुछ ही दिनों में, शायद दिसंबर In में इनका few days विवाह। in December, they're going to get married. शौर्य और जनिता अब आज Shaurya आए and हैं, Janita कल का पता नहीं, ये सब बच्चे today are here, but कितना not कथा sure about सुनेंगे। whether how much they're लेकिन going to listen. But मैं एक मैसेज दे दूं, I just want to convey a जब message. मेरा विवाह हो रहा था, When I was तब getting मेरे married, गुरुजी ने मुझे केवल एक लाइन कही थी my spiritual master just कि said लाल one गोविंद, line to me, संसार that सागर Lal में Govind, in कदम this रखने जा material रहे world, हो, you're going to तो इस enter सागर में जाने से in पहले this तैरना सीख ocean. लीजिएगा। But before you jump in गृहस्थ this जीवन ocean, में प्रवेश you should करने से know how पहले, to swim. Before you enter गृहस्थ into the जीवन के householder कुछ realm of मूल्य life, then there are हमें some values सीखने समझने चाहिए। that we should वैसे learn तो and मैं विवाह imbibe में in our आऊंगा, life. मेरा प्रयास Although I will रहेगा, attend the अगर marriage, that नहीं will आ be my पाया trust. तो मैं एक But मैसेज if I'm आपको unable दे दूं to, then I just want to convey कि a विवाह message एक that विश्वास का marriage विषय है। is a subject of विवाह trust. में So in सबसे marriage, बड़ी चीज होती है वो है first and विश्वास। foremost, and the most important thing is trust. जीवन में कुछ भी हो जाए, No matter पति whatever और happens in the पत्नी life, को husband एक and दूसरे wife के प्रति should पूर्ण have विश्वास होना जरूरी है। complete trust and faith towards each other. और यदि उस विश्वास का And 1% एक पॉइंट में यदि if कम हुआ ना, there is तो even जैसे one अभी कथा person में सुना ना, lacking, as you have संशयी heard in the आत्मा Katha, विनश्यति, that a doubt can मन में destroy संशय the उत्पन्न soul. हो गया If तो you have विनाश a हो doubt, जाएगा। then it can सो be detrimental or पति destructive. पत्नी दोनों की So जिम्मेवारी होती husband है and wife both कि have एक this दूसरे के प्रति responsibility हम that they both विश्वास रखें should have और faith जीवन towards में each ऐसा other. कार्य करें And ताकि we हमारे should work in जीवन such a साथी manner को हम that पर ब्लाइंडली विश्वास हो, our partner should और blindly न trust केवल us. And not जीवन only that, साथी,
अपितु सास your life ससुर partner, but also your सबके प्रति in-laws. विश्वास जीतना, Everybody, ये एक we should try to win their गृहस्थी का trust, and that कर्तव्य is होता है. the responsibility of a householder. હવે આવું બધું તમે બહુ સાંભળ્યું હશે અને So you તમે might કહેશો have heard this a ફરી lot, એક ઉપદેશ, लेकिन ये but शास्त्र की कुछ बातें हैं, कुछ these are अनुभव the की बातें हैं. things from यदि the समझ में scriptures आई, and of जीवन experience if का you ये सूत्र understand, बनाया तो जीवन and if पवित्र you हो make जाएगा. this हम्म? emblem of your और life, एक then बात your life will बोलूंगा, become pure and pious. And let me add one more thing शौर्य here और जनिता को, कितना to सुंदर Shaurya नाम है, and Janita. जनिता, शौर्य. The name is so शौर्य beautiful. माने शूरवीरता है, तो Shaurya means जनिता. brave heart. सो भगवान कृष्ण और राधा का ही नाम है, So जनिता these और are the names शौर्य. of Lord Shri तो Krishna जरा and ये Radharani. कि विवाह का अर्थ होता है, वी माने, So वी माने विष्णु, Viva, V है ना, means here वी Lord माने Vishnu, विष्णु, और वाह माने, ये and Vaha संस्कृत means, शब्द है. this is a Sanskrit वाह word. माने Vaha रिस्पॉन्सिबिलिटी, implies वाह responsibility. माने जिम्मेदारी, That is कर्तव्य. सो our विवाह में क्या होता responsibility. है, So what happens in a marriage? विष्णु की सेवा की जिम्मेदारी To पति serve और Lord पत्नी Vishnu, दोनों जीवन the साथी उठाते responsibility हैं. takes the देखो, responsibility to गृहस्थ take जीवन care of कोई Lord बुरा नहीं है, Vishnu. So the और householder realm of इस life is प्रकार से not bad, विवाह करना और and to जीवन get का married आनंद लेना, ये कोई बुरा and to नहीं है. enjoy their life, it भगवत is गीता not में तो bad. कृष्ण कहते It, हैं, in Bhagavad धर्म Gita, से Krishna mentions जो विरुद्ध नहीं है, वो whatever is काम भी मेरा not स्वरूप है opposed अर्जुन. to principles लेकिन of धर्म के religiosity, that अनुकूल होना चाहिए. lust is शास्त्र के also अनुसार my नीति form, नियम, but it के should be निमित्त according में to the Vedic यदि हो, injunctions and तो वो Vedic कृष्ण का ही scriptures. स्वरूप है. हम्म? लेकिन बच्चों को वह But धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, ये भी if you are समझना होगा. opposed जब तक to समझ में the नहीं Vedic आएगा, scriptures, and if वह we don't सुख व understand आनंद this, पूर्ण रूप से नहीं हो then पाएगा. we won't be able to enjoy सो उसका completely. एक मूल पॉइंट ये है, समाज So में the कितना fundamental कहे point लेकिन एक सार ये है here, कि the सेंटर conclusion भगवान is that कृष्ण को रखना the चाहिए. center should be यदि always माध्यम Krishna's, or मिडल Krishna में should be the भगवान center है, in our household तो life. ठाकुर जी सब कुशल मंगल रखते हैं, And if he's सब there, कुछ ठीक करते then हैं. everything will be सो ये एक उत्सव good. है जहाँ So पति this is और a पत्नी celebration with मिलकर, वी husband माने and wife. विष्णु और V वाह means माने Vishnu उनकी and Va सेवा की means जिम्मेवारी लेते हैं. to take responsibility to serve him. और यदि विवाह हो जाए And और उसमें विष्णु की after सेवा marriage, की जिम्मेवारी न हो, if तो वी that you निकल don't कर have this केवल आह responsibility बचती है. आह, to मैं तो मर serve गया, Lord Shri आह Krishna, then there is आह. only pain and जीवन भर distress. आह आह This करते रहते हैं, क्योंकि विष्णु निकल गया, वी नहीं है. because we or Vishnu is तो not आह present से anymore. बचना चाहिए. So हैं? we तो want to आयोडेक्स get मलहम लगाइए, उससे कुछ खा भी जाओगे rid तो कुछ नहीं of होगा. हैं? लगाना this छोड़ो. pain and distress. विष्णु की जिम्मेवारी. हैं? So we should take responsibility to serve Lord और Shri Krishna. जीवन भर तक माता पिता के आशीर्वाद, And throughout the life, उनके we should कुछ take blessings सिद्धांत, of your parents इसे and follow their समझकर principles हमें जीवन बिताना by चाहिए. understanding them, and we should try to आइए imbibe them in our life. So रास का now रहस्य. let's move to our वैसे तो topic, that is 80% हमारे Raas Rahasya. रेगुलर श्रोता है, So उनके लिए तो ये 80% are of our सब्जेक्ट regular परफेक्ट है. listeners. For them, the नए subject is लोगों को perfect, ऐसा होगा कि ये क्या but new उपाड़ा लिया people है. might think that what is रास he शुरू speaking. करो और खत्म करो, ये क्या रास. अब रास का पोस्टमार्टम हो रहा है. So now we are एक एक going पुर्जा deep into खुलेगा यहाँ detail पर, about the जैसे वो ये proclivity of this rasa इंजीनियर की dance. लैंग्वेज में डिकोड करते ना, पूरा So in the खोल language के of रास को engineer, खोलना है. there is तो decoding. देखेंगे. लेकिन एक So we will बात कहें, try. But I want to add जिस one thing विषय here. को हमने उठाया है, The topic that ये we have रास क्या taken, चीज है भक्तों, what हमने exactly बहुत is इजी it? ले लिया है. We इस have रास को taken it हमने बहुत very लाइटली ले लिया है. रास easily, वो चीज है easygoing manner. जहां But सुखदेव Ras is जैसे सुखदेव where प्रेम Shukdev सागर में गिर Goswami गए.
also रास fell वो in the चीज है ocean of this love. जिसको सुनकर Ras is what, परीक्षित डर by गए। listening this, इस रास Parikshit ji लीला में got scared परीक्षित ने दो दो प्रश्न पूछे। and he सुखदेव जी asked ने two यूटर्न ले questions, लिया। and रास का Shukdev ji जो took a पाठ U-turn. मांडा था शॉर्टकट में पटा दिया। He रास वो shortened चीज his है discourse. जहां Ras उद्धव is what, ओझल हो गए। where रास Uddhav वो ji चीज है got जहां lost. शिव पागल हो Ras गए। is where रास वो है Shivji lost जिसको his नरसिंह senses. मेहता ने दीवाना Ras is बना दिया। made रास Narsi वो Mehta चीज है mad नरसिंह in को love. दीवाना Ras is कर what, दिया। रास वो चीज है जहां मीराबाई मस्त where हो गई। Mirabai नरसिंह became दीवाना हुए, mesmerized. मीरा मस्त हुई। Narsi lost रास his वो चीज mind है बड़े बड़े विद्वान and heart. चक्कर खाकर Ras is what, तर्क where great, वितर्क great के पहाड़ में डूब गए scholars हैं। शंकराचार्य got वल्लभाचार्य drowned. Shankaracharya, रामानुजाचार्य Vallabhacharya, अनेकों संत Ramanujacharya, हाथ जोड़कर and खड़े great, रह great गए। sages રાસ with वो चीज है। stood with folded hands. અને આપણે કેડિયું ને દાંડિયા લઈને નીકળી જ પડીએ છે ને ક્યાં જાવ છો રાસ રમવા? હે? રાસનો And we રટ just મળશે dress up તમને? and we say that we are going for Ras. Do we even know રાસ what કશાય exactly is નથી। this Ras Garbha? इसलिए इस समाज में ऐसे Therefore, in अवसर this में society, on this वो occasion, इंटेंसिटी तो हम नहीं ला पाएंगे we won't be जो able to bring गुरुदेव that के मुख से intensity, सुनी थी। हम what वहां we have तक heard पहुंच भी नहीं from पाए। અમારે તો our આપણું Guru ગજુ Maharaj. કેટલું। We can't even અમદાવાદની reach. કથા છે એટલે મારે ગુજરાતીમાં વાંધો નહીં આવે। આપણું ગજુ કેટલું, આપણે ક્યાં સુધી પહોંચી શકવાના? So, till what રાજના point can we દરવાજે reach? પહોંચી જઈએ તોય Even if આપણું we કામ થઈ reach the જાય। doors of લેકિન આઈએ Rasa, then also we વિનમ્રતાથી will be successful. So, इस with all रास के humility, रहस्य को समझे। let's try to understand or decode this Rasa देखिए dance, रास समझने pastime के of the लिए Lord. So, to याद understand रखिए this, रास को careful, समझने के लिए to understand रस this समझना conjugal पड़ेगा। love, we need to understand क्योंकि Ras. रास माने क्या एक So, what बहुत exactly सारी is Ras? व्याख्या बहुत सारी So, बातें there हैं। are many, many लेकिन रास definitions, का एक अर्थ मैं but आपको कहूं let me tell you रसानाम one meaning समूह of इति रास। Rasa. रास माने क्या? What does Ras रसानाम implies? समूह, रसों का Rasanam Samuh, समूह, that जहां is a रसों की collection of आलले all हो, the mellows, जहां जहां where रस ही रस बहता हो, सो there is this रसानाम transcendental समूह mellow, इति so रास। that accumulation is Rasa. रसों का समूह जब मिलता है उसे रास When there is a कहते हैं। group ये of these संस्कृत में transcendental mellows, આમાં then આપણે it is તો Rasa. લોચો જ થાય ને। So હવે this is in કેવું છે Sanskrit. રસાનામ સમૂરા રસો का। हमें तो घटत घटत एकदम इजी करते हुए हमें सुनना है। So we need to संत वो simplify हैं it further. A great जो sages जो that कितनी भी गहरी और कितनी भी कठिन who बातों को सरल बनाकर can बताए। simplify the toughest or the और hardest subject सरल matter. बात को जो गहन करके बताए वो And if संत है, someone वो कोई complicates और है। unnecessarily, then that is something सो different. रास को थोड़ा समझे। So if we try to रसानाम understand this समूह, rasa, रसों का समूह उसे रास the कहते हैं। collection of तो फिर the पहले रस को transcendental mellows, समझना पड़ेगा। then first we need to जब understand जब this रस rasa. समझ में आएगा तो When रास we समझ understand में this आएगा। rasa, then क्योंकि only we रास will be में able रस to है, understand this rasa रसों dance, का समूह है। because it is a तो आओ collection अब of रस all ऊपर these बात करिए। divine mellows. So now let's move to कोई ras. लोग कहें ठीक है आप Some हमको तो people might. बस एक दो घंटा निकालना है, आप लगे रहो। ऐसा तो नहीं है ना। ये बहुत मतलब मेरे नाभि के शब्द हैं। मैं वैसे 9 बजे So सो जाता हूँ लेकिन ये कथा मैंने usually I ली sleep in है, ये मैंने o'clock, but बनवा I've लिया taken है। this 9. लेकिन I've फिर मन taken में this हुआ at the night time. कि भाई रास तो रात I को ही thought that होता है भाई। that Ras should be ये performed in रास night. मैं अमेरिका वालों के लिए कहता हूँ, I'm talking ये about people दिन का in विषय US. नहीं है, It's not the रास topic रात का of विषय morning. है। It is a topic of the ये तो night. रात्रि, आप जानते हैं Are you aware ब्रह्म रात्रि की समान रात्रि, 1000 वर्ष की वो रात्रि थी भक्तों। that this was a 1000 1,000 years वर्ष long night? की रात का रास चला था। सब आगे बात आएगी, So this लेकिन all will रात को be हुआ था। described. But this happened during चैतन्य the night. महाप्रभु Chaitanya Mahaprabhu अपना ये श्रीवास आंगन में in दिन को Srivas कीर्तन करते Angan, थे, did रात he को used to करते perform थे। congregational chanting in the morning or in the चैतन्य evening or night? महाप्रभु राय रामानंद का संवाद, The ये दिव्य conversation कथा between दिन को Chaitanya होती थी, Mahaprabhu and नहीं रात Ramanand को Rai, होती थी।
Did it happen कुछ in the morning? बातें, No, it happened कुछ in the evening. भाव, So some कुछ मूड topics रात को and होते हैं। discourses are सो appropriate to be पहले discussed तो in the अमित night. नारायण प्रभु ने कहा कि प्रभु जी इस So बार first, रात and then को कर Mama said, पाओगे? मैंने कहा नहीं would you भाई। be able to do it in the night? फिर बात जब रास लीला की आई, मैंने कहा But नहीं अब when तो the रात को topic ही was करना discussed, है। then I said that, नहीं तो हमारे we 12 will वागी जाए तो have to चालશે, have रात it की in करना night. है। लेकिन चिंता मत करो, हम 12 नहीं बजाएंगे। सो क्या कहते हैं, महफिल भी है, समा भी है, माहौल भी है। शरद पूर्णिमा की रात्रि भी आने वाली है। So the So, night of Sharad Purnima is ठीक है, approaching as तो well. The रास time is समझने appropriate. के पहले So to हम रस को understand this समझें। ras, ओके, first let's understand रस this क्या rasa or divine mellow. है? रस, रस क्या है? पहले तो रस So को समझना ही मुश्किल है, to understand क्योंकि rasa रस also is an ऐसी uphill वस्तु task है because जो ras is समझी नहीं something जाती, which cannot एहसास be की जाती understood. है, It can be जो फीलिंग्स experienced. है, एक फीलिंग है, These एक are feelings, एहसास है। તમે emotions. રસગુલ્લું ખાધું? If you આપણે ate કાલે જલેબી ને ફાફડા ખાવાના rasgulla, છે, મેં તો મગાવીને રાખ્યા છે। આમ તો અહીંયા ભાગવત કો ભી ફાફડા tomorrow we are ખા के going आने to eat वाला है। pafra and દશેરા jalebi. એટલે આપણે તો જલેબી ફાફડા જ ને, બીજું શું? So રાવણ for મરો us, હોય તો Dishera મરે, means ન મરો હોય તો ન મરે, jalebi આપણે and જલેબી fafra. ફાફડા ખાઈને આનંદ Whether કરીએ। he lives or dies, we should eat fafra jalebi. लेकिन मान लो But आपको गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जिलेबी आपको खिलाई, राइट? if you are फिर आपको given कहा कि आपको jalebi कैसी rasgulla, लगी? and बहुत if you are मीठी, told, how do you like, very sweet, बहुत बहुत अच्छी। હવે આ it's ડાયાબિટીસ very વાળાને good. તો આ બધું સાંભળવાનું જ છે, A જ્યારે person who is suffering ધુમાડા from કરીને diabetes, he just will have કેવું to લાગે? listen. बहुत अच्छा, बहुत मीठा। चलो, तो उसने सुना कि मीठा, अब So he मीठा, दैट्स heard इट। it is sweet. That's it. अब वो गुलाब जामुन मीठा में भी वो कैसा, वो What पोचू पोचू kind of लागे, उसका sweet is एहसास it कैसा soft? था, वो What तो is the बेचारा वो experience डायबिटीज वाला तो नहीं ले पाएगा। that a वो तो जो diabetic खाए person तो cannot उसी को enjoy? होगा। But a ये person समझ रहे who ना, eats एक can only साधारण सी relish it. बात है ये, So this is an ordinary साधारण रस, thing. गुलाब So for जामुन का इसका। understanding हाँ? a अब देखो ये taste हमारे भागवत of a में sweet, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल so आते हैं। ध्रुव there are महाराज many कहते many हैं कि examples भागवत of कथा एक नशा Bhagavatam. है, नशा। शराब पीओ Guru जितना Maharaj नशा says होता है that उतना भागवत में। Bhagavatam હવે Katha તમને તો is આ બધું બોલવાનું જ intoxicating. ને, કારણ કે આપણે ક્યારેય પીધો નથી, અને So હવે how are આપણે we going to say પીવાય that નહીં। we haven't drunk पहले कुछ anything होता and तो we're not ठीक था, remembering? अभी तो पी भी नहीं सकते, तो हमको तो केवल बोलना ही है। So लेकिन आમાં we જે have to પીને just बैठा speak. છે ने, So those who उसको तो have वो याद drunk, आता होगा कि they याद will वो remember. वाला। है ना, वो मतलब ये जो रस है, So this संसार का प्राकृत mellow, रस, एक so this साधारण रस भी हम लोग देखें ordinary taste तो or वो भी एक्सप्लेन नहीं किया ras जा सकता, उसमें cannot सर्टेन be लेवल तक easily उसका explained. एक्सप्लेनेशन To होता है, some ज्यादा नहीं हो extent, we सकता। can explain, but not beyond that. उसका तो वो जो जो चखे, वो जो खाए वही जाने। Those who taste or relish ओके, then only लेकिन can tell फिर भी or शब्दों के द्वारा कुछ understand. कुछ But through पकड़ा जा सकता words, we है, can just कुछ understand कुछ a समझा little. जा सकता है। हमारे वेदों में क्या लिखा जानते हैं? So, what is mentioned ब्रह्म जो in है ना, Vedas, अनुभव गम्य नहीं है। Brahma वेद is में not लिखा है ब्रह्म अनुभव गम्य नहीं है, लेकिन not हाँ वो anubhagamme, वस्तु that के is, द्वारा but उसका by अनुभव true किया things जा we सकता can है, experience वो it. शब्द। That is word. ब्रह्म को तो वेदों ने नेति कह दिया ना, नेति So, नेति Brahma अनुभव is गम्य, the लेकिन शब्द Brahman के has been द्वारा described उसका as अनुभव किया जा Neeti, सकता that is endless, है, infinite. शब्द के द्वारा। But through words we और can दूसरा, understand. And second, આ પેલું શબ્દ વાળું કદાચ આપણને અઘરું પડે, બીજું બહુ સારું છે। but the second one ब्रह्म is का far more अनुभव easier. दूसरा प्रसाद के द्वारा Experience of किया जा Brahma is सकता है। through prasadam. इसलिए खूब प्रसाद खाइए। Therefore, प्रसाद we should खाते हो तो eat अनुभव नहीं होता, prasadam. आहा Then only we कितना can अच्छा experience प्रसाद है, वो that ब्रह्म this was का so good. अनुभव, भगवान का अनुभव है। That is the experience of तो the शब्द Lord. के द्वारा और So प्रसाद through the के द्वारा word, उनका अनुभव होता है। we can experience. खैर, मैं रस के ऊपर कह रहा था, So I was talking ये about this रस जो rasa, है that this अलौकिक है। rasa अलौकिक माने is ये transcendental. मटेरियल That जगत is, से, प्राकृत जगत it से is परे है। beyond रस this material world जहाँ or ये existence. रास जिस रस से बनता है, मैं उस So रस की the बात कर रहा ras हूँ, राइट?
is formed by which ये rasa. रस I'm जो talking है about this rasa भौतिक or mellow. जगत भौतिक वस्तु प्राकृत नियमों से परे है। So it is beyond एक बात कहूं, this material world. जैसे Let me add one भगवान more thing here. अकल्पनीय है, As the Lord अवर्णनीय है, cannot वैसे be ये रस भी described completely अकल्पनीय, जिसकी unimaginable, कल्पना भी similarly, नहीं की this जा mellow सकती, जिसका also वर्णन is भी नहीं beyond किया our जा सकता। comprehension. It cannot be described in ये words. लाल गोविंद दास कौन चीज है? स्वयं कृष्ण को भी बिठाकर पूछो कि भाई Even रस के बारे if में you कुछ ask बताओ, Krishna himself तो to कृष्ण भी कह tell देंगे भाई about this આ તમે rasa, રેવા he will દ્યો, also say ગુજરાતીમાં જ that બોલજો you એટલે should અમે કહી just દઈએ, keep it હા, aside. તમે આ રેવા દ્યો, બાકી રાસ કરવાનો હોય તો કયો, આપણે If you want to enjoy rasa, then इसका we can start. कौन एक्सप्लेन कर सकता है? Because भगवान who भी can अपन explain उसको this? नहीं बोल Even the सकते। Lord can't speak ये भी much on इसकी it. महिमा, ये शब्द के द्वारा आप एक अनुमान लगा सकते हो, So इसलिए you मैं can इसको बोल just, रहा हूँ। through हमें the रास words, you can समझना है just तो पहले रस को imagine. समझना होगा। ओके, So because तो before we रस understand rasa, we ये need to understand भौतिक rasa. नियमों से So परे है, this rasa is भौतिक जगत beyond से परे है। this material world, भगवान its के rules and लिए regulation, अकल्पनीय और and it is अवर्णनीय है। beyond our comprehension and beyond रस केवल description, अनुभव का like the Lord, विषय है, and it is अनुभव का a विषय है। matter of लेकिन experience. हाँ, But रस yes, आनंद देता है, it gives us आनंद bliss and देता है। ecstasy, जब चित्त pleasure. शुद्ध हो जाए, When our heart जब gets हमारा चित्त purified, शुद्ध, केवल शुद्धि से काम नहीं होगा, and not चित्त only by शुद्ध just हो जाए purity, और उस रस को धारण and करने के लिए when योग्य बन we जाए, are qualified to sustain that और फिर rasa, वो रस जब आ and जाए then तो वो if that आनंद को rasa देता comes, है, then it gives us आनंद pleasure देता or है। bliss. किसी एक संत ने बहुत सुंदर लिखा, A great sage has रस beautifully described भौतिक जगत से परे है, that ये it is केवल beyond this material रसिकों world, के द्वारा ही महसूस किया and जा सकता है। it can be felt only by और एक बात कहूं, experienced ये रस devotees उसी को or rasic मिलेगा bhaktas. Uh, जो रस This को can be प्राप्त enjoyed करने की इच्छा करेगा। only पहले तो who इच्छा, has this intense desire. First and foremost, मैंने you should मेरी have that इन intense desire. आंखों से In डिवोटियों with my में, own eyes, हरि in भक्तों devotees, में, even मैं तो एक साल में I've लाखों लोगों को मिलता हूँ I meet भागवत जी की lakhs of कृपा से। people by mercy of Srimad Bhagavatam. उन लाखों भक्तों में Of these lakhs of 1% people, के भक्त शायद only रस one की person कामना करते of होंगे, रस devotees की इच्छा, desire बाकी लगे this हुए हैं rasa. All others are मैनेजमेंट engaged में, यहाँ in एक कर दो, दो का management, चार, ये करो वो करो। रस this and कौन that. चाहता है? But who इवन desires भागवत this का mellow? पहला ही शब्द रस है। The first भागवत के जो word 3 is श्लोक तो ras आए, from प्रारंभ Bhagavatam. में ही कहा The गया first रसिका three भूमि verses भावुका। opens with कौन rasa, रस के बारे, but who વહીવટમાંથી ઊંચા worries? આવે તો રસ પીવે ને। આ કેરી के रस और आम रस और गन्ना रस में से टाइम मिले तो ये रस पीवे। If we और get out आजकल of तो this sugarcane निंदा and mango रस, juice, प्रभु ये सब रस छोड़ो, हमको निंदा में so ही forget इतना रस आ रहा है about these कि rasas. रास रस ये सब छोड़ो। तो सबसे पहले कि So रस first and आस्वादन foremost, करने की इच्छा। the और मैं desire तो to एक बात कहें, enjoy दिल this से mellow कहता and हूं, ये devotees, रस I'm आस्वादन telling in my heart करने की इच्छा, that पहले तो ये मूलभूत, first ये and बेज foremost है। और ये basic इच्छा कब आएगी? ऐसे foundation is रसिक to भक्तों का listen to संग मिलेगा। this transcendental, मैं तो mellowful कृष्ण को करोड़ों aspect, धन्यवाद दूं, and it शिल will प्रभुपाद happen जी को only शत शत नमन when we करूं have a कि पूज्य राधा shelter गोविंद and गोस्वामी महाराज association of जो a रसिक, mellowful Rasik devotee. रसिक, And let me be उनका grateful, सानिध्य, express my उनकी कृपा gratitude to मिली ताकि Srila Prabhupada रस and की कुछ our इच्छाएं हुई, His Holiness Radha कुछ Govind इच्छा, Goswami Maharaj. बाकी कोई हमारी And we गति had नहीं, just हमारा little गहराई नहीं desire, है ये सब, but we got such a लेकिन Rasik इच्छा तो Bhakta. करते हैं। पहले तो इच्छा होनी चाहिए, So first and foremost, we should और have जब this इच्छा desire. होगी तो And ऐसे once we have this रसिक desire, संतों का then अनुगत्य, ऐसे we will रसिक get संतों का a एसोसिएशन जब होगा, association of तब such कुछ great कुछ exalted उस devotees. रस को Then महसूस करेंगे। आप बोल we नहीं can पाएंगे, आप experience कहेंगे a फलाने little प्रभु जी bit, की कथा but we हमको won't be बहुत able to अच्छी speak. लगती है। We will say that हमको तो ऐसा we होता है वो like बोले the हम katha of सुनते ही him, जाए, सुनते ही जाए, the हम वो thing that एक्सप्लेन नहीं he कर should keep पाते on हैं। speaking. We are unable कई to बार कोई पूछे explain. हमको Sometimes हिंदी में people say सुनना बहुत, अरे तारू दादू हिंदी नहीं, वो उसमें रस है, it's not वो about समझ पकड़ नहीं Hindi, पा रहा है। but it is हिंदी पूरी about दुनिया rasa. बोलती है, हैं?
everybody speaks हिंदी Hindi, पूरा जगत बोलता है, क्या वो सुनने का मन होता है? but do you like to कई listen to that? बार हम But उस रस का sometimes एहसास करते हैं, आनंद we लेते हैं, लेकिन experience it, वो we पकड़ enjoy it, नहीं पाते, वो समझ but we नहीं are पाते। unable to express it. कई बार ऐसा भी होता है And sometimes it कि कुछ so लोगों happens की as well that बातों में आकर ऐसे रस से वंचित the भी रह जाते हैं। people get ऐसे लोगों को भी devoid अनुभव of मिलता है। such कुछ mellow. बातें, कुछ कान भरे और कुछ ऐसा हुआ तो रस जगत से ही हम्म, So वंचित they रह leave गया। this बहुत बड़ी बात है। world of और rasa. यहाँ तो यही कहा, अंत में तो यही कहा जाएगा, So ultimately it रसिकन की presents बात रसिकन ही जाने। रसिक की बात रसिक जानते हैं। that a mellowful लेकिन devotee फिर can भी मैं understand the mellows विनम्र of a प्रयास devotee. कर रहा हूँ, But क्योंकि I'm trying with all my humility. भगवान बुलवा रहे हैं। The कहीं ना Lord कहीं is आपने making us भी कुछ speak, and साधना तब किया some होगा, कुछ ना we कुछ might तो have होगा। पता नहीं क्या performed है, some लेकिन austerity or कुछ तो है। piety. I don't know what, but एक something is ग्रंथ है there. हमारे आचार्यों ने लिखा, There is a scripture written by our saintly अलंकार scholar कौस्तुभ। उनमें कहते हैं कि रस एक Anantkar ऐसा Kaustubh. जादू है, So he मैजिक says है। that it अब is देखिए, such मैं a पहले कह magic, चुका हूं as कि I've already रस एक mentioned, that एहसास है। Ras is ओके, an अब experience. एहसास को मैं शब्द से So एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा I'm हूं। trying to तो explain मैंने this experience रस के through बारे में words. प्रयास किया, राइट, और प्रयास करूं जितना आप So पकड़ let me पाओ। try more, ओके, whatever you can understand. तो अलंकार कौस्तुभ में, अब So in मैं भी जो Alankar प्रयास Kaustubh, कर रहा हूं अपना नहीं कर रहा हूं, किसी का I'm भाड़े पे लेकर, also हमारे वहां गाली using देते the हैं ना, words भाड़े from की our गाड़ी, other मतलब इस scholars. भाड़े का माल अपना क्या है? हैं? Nothing belongs to us. और जिसका भी भाड़े पर लेते हैं ना, भाड़ा चुका देना चाहिए। कुछ लोग And भाड़े पर लेते हैं, whoever we चुकाते take नहीं it, है। अब जैसे we मैंने कहा have to pay. अलंकार कौस्तुभ, ये तो उसी So की as बात I है ना, speak उसी के ब्रांड Alankar पर लिया Kaustubh, मैंने, और मैं मेरे नाम पर चढ़ा दूं? हाँ? मैंने थोड़ी कोई रस टेस्ट किया है, वो so अलंकार I कौस्तुभ haven't में जीव tasted it. गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने किया। It उन्होंने is जो by किया Rupa मैं आपको Goswami, Jeev प्रस्तुत करूं, Goswami, कुछ मुझे भी समझ में आए, कुछ आप। what they have experienced सो and रस, what I understood. तो अलंकार कौस्तुभ में कहते हैं रस एक ऐसा So जादू है, it is said that it is मतलब such a वो magic रस मिले तो that वाह, if you get that mellow, you ऐसा enjoy, हुए बिना रहता नहीं, वाह निकल जाता है, दैट्स you इट। won't be ये वाह की unable भावना to ही stop रस yourself. की That आत्मा है। expression of ऐसा happiness आचार्यों ने, is जो rasa. जिस आचार्य ने लिखा उसने तो अनुभव करके लिखा, उसने तो, So the Acharya has मतलब आप experienced it बैठे हो and ना written सभा में, it. कोई So कथा all में you कोई are ऐसी sitting here. बात आ गई, कुछ ऐसा, So if there is आपको something बोलना नहीं है, आपकी you पूर्व don't want तैयारी to नहीं speak, है, लेकिन you haven't वाह, prepared, वाह, but ऐसा निकल जाए, you, समझो you वो रस है, वो रस है। become मैंने ऐसे ecstatic. That श्रोताओं is को rasa. देखा है। I have seen अरे such मैंने क्या देखा, devotees. मैं खुद जब कथा सुनता हूँ तो कभी When कभी I चिल्लाता हूँ, listen ये to लोग आ Katha, जाते हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं, and they all come. अकेले अकेले वाह वाह करता हूँ। हाँ? वो अंदर से मतलब वो टच कर जाता है। It यार touches इतनी our बड़ी heart, बात सुने और वो and निकले by नहीं, listening, and रस if we का don't बाढ़ appreciate, निकलता है बाहर। there should be a हमारे मधुसूदन प्रभु कभी कभी wave इतने रस में आ जाते हैं, of उन्हें मुझे rasa. लगता है ये टीवी Madhusudan Prabhu तोड़कर comes in बाहर so ना आ much जाए, that he will break the ऐसा television and हिलते come हैं। out. वो रस है, वो रस हिलाता So है। this rasa makes तो us enjoy. आचार्य ने अपना अनुभव से So लिखा acharyas have कि written by their वो वाह निकल experience जाना, that this ये रस की appreciation आत्मा or है। appreciative tone is the soul of जैसे rasa. हम किसी भी अच्छा स्वाद लेने के बाद नहीं कहते So when we आह eat यार something मजा आ well, गया, we say that, oh, we वो enjoyed or टपरी we की relish चाय it a lot. चुस्की मारते हुए, आह मजा आ गया, उसमें मजा, वो जीभ जल रही है, अंदर भी जल रहा है? Our tongue is लेकिन burning, ये and एक inside also we are साधारण burning. वस्तु में हम लोग In करते हैं, ordinary thing, we say that और we जब have enjoyed. अप्राकृत दिव्य रस मिले तो And वो when वाह we get this निकलता divine है। transcendental mellow, then we जैसे can't मान लो express आपने our appreciation. किसी ऐसी खूबसूरत वस्तु के So बारे में बहुत सुना है, you might have उसकी heard about महिमा many, जानते many हैं, beautiful things. You उसके know सारे the गुण glories जानते हैं, and उसको कभी qualities, आपने to देखा say, नहीं, but you haven't seen it और with your own अचानक eyes. वो आपके And सामने आ when it जाए comes in तो front of कुछ देर के you, लिए आप तो अवाक रह then जाओगे, for some moments you will be आपकी आंखें mesmerized, बाहर आ shocked. जाएगी, आपकी You, खुशी you का won't कोई have ठिकाना नहीं any रहेगा, और उस समय एक bounds of आश्चर्य भरी घटना होगी happiness.
And then there और will वो be जो this रोमांचकारी surprising जो act that अनुभव है that वो रस experience है। that is a मैंने पहले भी rasa. कहा मैं प्रयास कर रहा हूँ, I हैं? told earlier ये that I'm सब trying शब्दों के द्वारा उस रस through को the बताने का। words to express this rasa or define this rasa. कुछ ऐसी घटना रस किसे कहते हैं आचार्य अपने अनुभव में लिखते So हैं, the scholars with their कुछ ऐसी experience write अनुकूल घटना हमारे स्वभाव when के there is अनुसार, कुछ ऐसी something घटना which जो is हमारे according प्रेम को to our nature and आनंददायक behavior, होती है, which हमारी gives us इंद्रियों bliss को and स्तब्ध ecstasy, कर देती हैं, which हमारे रोंगटे shocks खड़े कर our, देती हैं, हमारे mesmerizes our मस्तिष्क में senses, उत्पन्न and कर we get देती the है, 8 symptoms of उसी को रस ecstasy. कहते हैं। That is rasa. सो रस के विषय में आचार्य गण So, बता in रहे हैं। reference to rasa, this is what the scholars have श्रीपाद written. रूप गोस्वामी ने तो भक्ति Sripad रसामृत Rup सिंधु में Goswami in Bhakti Rasamrit Sindhu or श्लोक Nectar of कोट करते Devotion हुए कहते हैं कि quoted a रसो verse and said, वैस रसम हेलाय Raso Vais. लब्ध्वा नंदी भवति। रस माने एक Ras चमत्कारिक implies सुख a जो transcendental हमारी सभी mellow मानवीय or धारणाओं से happiness, परे हैं। which is हमारे beyond मन में our हमने human जो धारण कर comprehension. रखा है कि Whatever ये सुख, ये experiences आनंद, we ये have, that this तपमोक्ष is सुख, ये happiness तपमोक्ष, and मतलब ये ecstasy. सबसे जो So these are मानवीय so धारणाओं it से is परे even beyond that, चमत्कारिक सुख का नाम which है is रस। transcendental happiness or ecstasy, is rasa. ये रास शब्द कहाँ से आया? So this is from where this word ras came into ये existence. सब छोड़ो, थोड़ी देर आपको समझ में ना आए हैं? So if you don't हमारे understand this, भगवान श्री कृष्ण then कौन है? who is our Lord बताइए, Shri कृष्ण का Krishna? स्वरूप क्या है? कृष्ण का What is अनुभव the दो form of प्रकार से Lord? हुआ। So Krishna can be experienced वेदों by ने तो two कृष्ण forms. का अनुभव तात्विक रूप से क्या किया? Vedas have कृष्ण deciphered him in सच्चिद आनंदमय विग्रह है। कृष्ण कौन philosophical है? point that तो he कृष्ण is Satchit बहुत बड़ा Anand. ज्ञान रूप है, He परमात्मा is the रूप है। epitome of knowledge द्वासु and पर्णा Supreme Soul. सराजा सखाया, एक वृक्ष है उसकी डाली पर He is दो like a पक्षी tree. बैठे हैं, And there एक are कर्म two करता words. है, एक One साक्षी is है, performing the एक action पूर्ण and the ज्ञानी है। other is witness. तो वेदों One ने is complete कृष्ण को knowledge. परखा। So वेदों ने Vedas कृष्ण को वदन्ति तत्तत्व इदस्तत्वमिति experienced ज्ञानमद्वयम् Krishna. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति। वेद की पहुंच कहाँ तक रही? And where could they वेदों ने reach? कृष्ण को क्या कहा? ये ब्रह्म And है। what did they address him? That ओके, he is a Brahma. कृष्ण का स्वरूप क्या है? ब्रह्म है। What is his कृष्ण form? कौन है? That is परमात्मा है। impersonal Brahman. That is the Supreme कृष्ण Soul कौन residing बना in है? everyone's भगवान heart. है। He is ये वेद ने Bhagwan. कहा। That is लेकिन what the Vedas have प्रेमियों ने mentioned. कृष्ण But का अनुभव the क्या किया mellowful devotees who have है? experienced Krishna, प्रेमियों ने what have they कृष्ण said? को ये सब माना, ये सब है, They have लेकिन agreed that कृष्ण का he is मूल all स्वरूप this, क्या है? but the fundamental form रसो of the Lord वैस। is Raso कृष्ण रस Vaisa. राज है, He is कृष्ण the रसिक शेखर है, कृष्ण रसामृत मूर्ति है, वो अपने आप में pinnacle एक of रस Rasa. है। ये He राधा रानी himself का is अनुभव the है, mellow, and ये that is what रसिकों का Radharani अनुभव है। expresses. And this is the अब experience बताइए, of mellowful प्रेमियों के पास experienced तो devotees. वेद भी हार गए। अब So रासलीला में even हम the लोग Vedas देखेंगे, get defeated वेदों की by ऋचा the devotees. श्रुतियां The गोपी बनकर रासलीला में कृष्ण के पास आएगी। Shrutis of सौभाग्य Vedas दीजिए, हैं? come as gopis and सो tell to give them this इसका अर्थ fortune क्या to हुआ? participate in Rasada. So कृष्ण what does के it imply? कृष्ण एक्चुअली कौन है? रसामृत What who मूर्ति, is Krishna? He is रसमयी epitome विग्रह, of rasa. रस स्वरूप। He is a उस mellowful रस deity, स्वरूप कृष्ण and को जानने के लिए such वेद का mellowful ज्ञान भी Lord, काफी नहीं है even the knowledge of कि Vedas વેદ is not ટૂંકા પડે sufficient કૃષ્ણ પાસે, હું તમને ઈ કહેવા માંગુ છું, in front of in comparison with क्योंकि Krishna. The પૂરા Vedas વેદ become પढ़ लेने के short बाद कंक्लूजन after क्या listening हुआ? to all the वो Vedas. What is the परमात्मा है। conclusion? That he is a वेदों का Paramatma, that is कंक्लूजन the कहाँ आया? Supreme Soul. वो ब्रह्म है, वो That in ज्ञानी है। other words, he was Brahma or knowledge लेकिन personified. But गोपियों ने क्या कहा? what वो has the gopis रसामृत said? मूर्ति है, He वो is the रस epitome रूप of है, rasa. वो रसो वैसा है। अच्छा, आप कहोगे कृष्ण रसामृत मूर्ति है, रस का स्वरूप है, So, इसका प्रमाण? what is the proof that he અમારે તો is ઓલી the પેલી આપણે ત્યાં epitome of ગામડા mellow? ગામમાં આ ગાયને ખીલા સાથે ન બાંધી રાખે, So we આમ કરી tie આમ the ગાય cow ઘાસ ખાવા જાય પછી પેલો with the ખીલો neck, ઊંઘવા આવી જાય, એ and થોડીક દેર then ખીલો, અમારે તો આ it ભાગવત ખીલો goes ઊંઘવો પડે, આમ તો a એક little વર્ષ far, and મીટર then પોઈન્ટ she has to ભાગવત come હે, back.
So for us also the central point is Bhagavatam. All the philosophical point, whatever we go here and there in Puranas, etc. But the central focal point is Srimad Bhagavatam Pramanamamlam. I said, बात गई इतना तो आपको मैच्योर होना चाहिए रास से रस और फिर रस क्या और फिर मैं अभी ये सिद्ध कर रहा हूँ कृष्ण का so I'm trying to prove here that the form of Krishna is mellowful, प्रमाण है भागवत and the proof आप इतना तो lies जानते in हो Bhagavatam, कि as you all भागवत are और aware. भगवान में कोई अंतर नहीं There is no difference between ये Bhagavatam भागवत क्या है and भगवान का Krishna. ही स्वरूप है It is the कृष्ण का form ही of वांग the में Lord. विग्रह है तो भागवत का स्वरूप क्या वेदव्यास मुनि भागवत जी So में लिखते हैं Vedvyas Muni writes in Bhagavatam, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखादय अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भूवि भावुका रस ये भागवत here का you can see this word है जिसमें Raas. रस का वर्णन This is the third verse of और क्या Bhagavatam कहा where it वेदव्यास describes मुनि ने rasa. What has वेद Vedvyas रूपी Muni वृक्ष written? का पका That हुआ फल नहीं Srimad Bhagavatam उसी is the फल का ripened बना fruit. बनाया रस है It's श्रीमद् the fruit भागवत juice तो of भागवत this क्या है रस है अब क्या Vedas. करना है And पिबत what are we supposed to भागवतम do? दूसरी लाइन में Pipat पिबत Bhagavatam in the माने second पीना है line. भागवतम We भागवत have को to drink. पिबत भागवतम भागवत को पीना है So we should अच्छा relish. भागवत क्या है तो आप देखो And what is सब्डिविजन करना होगा Bhagavatam? पिबत We need to भागवतम divide रसम rasam. ये साउथ इंडियन वाली रसम नहीं है So this is रसम not माने the South संस्कृत Indian में rasam. So in Sanskrit, साउथ rasam. इंडियन रसम लाओ जो हाँ? रसम रसम माने रस रस को संस्कृत में रसम So ras, that is तो juice. पिबत भागवतम रसम भागवत So रस को Pibat पिबो Bhagavatam भागवत ras. रस है So we ओके should drink this भागवत juice. रस है तो Bhagavatam भागवत और is a कृष्ण में juice. कोई अंतर नहीं है तो भागवत रस है तो कृष्ण भी रस So है Krishna and Bhagavatam are non-different. So if Bhagavatam is सो the पिबत juice, then he भागवत को is पिबो क्यों also क्योंकि the juice भागवतम or रसम mellow. भागवत रस है तो भागवत यदि रस है तो भगवान भी रस So है if Bhagavatam is a mellow, then even Lord is mellow ओके because they are non-different. एक अंदर की बात कहता हूं आपको कोई नहीं कहेगा ये So रात का let me share उजागर a आप कर रहे secret. हो ना इसमें As एक you काम की all बात है ये विपुल भाई are न्यू जर्सी बोलो not स्वेटर पहरीने sleeping, बैठा जो कितनी ठंडी लागे तो yet you are still बात मैं listening. आपको कहता जाऊं So let me share it with बहुत you. गहरी बात है भक्तों कृष्ण कौन आपने क्या सुना Who is Krishna? कृष्ण What have रसमय you heard? मूर्ति है He कृष्ण is the रसमय विग्रह epitome है of mellow. राइट He is personification of the transcendental mellows. भगवान श्री कृष्ण का मुख्य कार्य The केवल prime एक ही है work of Krishna is only भगवान one. श्री कृष्ण का Lord मुख्य Shri कार्य Krishna's केवल एक और major मात्र task एक is वो है only and रास करना only to perform rasa dance. रास को छोड़कर कृष्ण कुछ नहीं Leaving it, करते Krishna doesn't do रास anything. को छोड़कर कृष्ण को जो कुछ भी करना होता है Whatever वे he दूसरों से have to करवाते do, हैं he get it वो done नियम by से कर others. पाते हैं रास को छोड़कर कृष्ण को So अन्य leaving कुछ करना Ras, भी पड़ा तो मानो if he कृष्ण wants to do अपने something स्वभाव से else, विरुद्ध कर रहे हैं then he is doing it as opposed to his nature. अब गहरी में गहरी अब ये सब फाइलें खुलती जा रही है दिल की फाइल हैं? एक बात कहें So let me share कृष्ण को जिसने one thing. जैसा समझा वैसा Whoever पाया understood Krishna in whatever पूरी manner, they दुनिया found में him in the same manner in the कृष्ण whole को world. जिसने जैसा समझा वैसा पाया Whoever भगवत thought of गीता Krishna, they ये got यथा in माम this प्रपद्यन्ते in अहम Bhagavad Gita, तेभ्यः Yathamam भजाम्यहम् Prapadyante. जिस भाव में कृष्ण In का whatever भजन किया mellow उस रूप they में have कृष्ण performed आया devotional service, in that form Krishna appeared. तो ये कृष्ण के ऊपर बंधन हो गया ना ये So कृष्ण then के ऊपर Krishna is एक bounded. बंधन हो गया कि भाई ये डिवोटी इस भाव में भजन This, कर रहा this है तो devotee इस is रूप में performing दर्शन devotional कर service in this form. जिनकी So रही I have to भावना come in जैसी this form. ये डिवोटी इस भाव में दर्शन करता है तो इस रूप में दर्शन दो तो बेचारे कृष्ण भी डिवोटी को आज तक दर्शन दिए उस डिवोटी के भाव के अनुसार So Krishna gives personal audience according to पूछो their भाई mellow. तेरा भाव कौन सा So है
But ask him what is बात his समझ में आ रहा है? exact mellow. Do you understand? हमारी भावना के अनुसार, जैसे ये कमला According माता to जी ये our नंद mellow. गोपाल की सेवा करती है, इसके सामने कृष्ण आएंगे, लाला बनकर आएंगे, हैं? सबका अपना अपना भाव है। So everybody तो has हम their लोग own mellows. हमारे भाव के So अनुसार उसका according भजन to करते our हैं, तो वो तो बेचारा mellow, बाध्य we है, perform devotional service. He वो is तो अपनी bounded. प्रतिज्ञा में है कि He डिवोटी is जिस in भाव में his भजेगा, pledge that भजन the करेगा, devotee मैं उस रूप में performs धारण devotional कर service in लूंगा। whatever mellow. उसका I will come in अपना that भाव form. कौन सा है? But what is his original अंदर own की बात यह है, mellow? कृष्ण So का अपना Krishna निज स्वरूप है is रासेश्वर, eternal form is रास Raseshwar, स्वरूप, ये Rasa कृष्ण का Swarup. निज स्वरूप है। That is his eternal और form. कृष्ण का निज स्वरूप And रासलीला Krishna's में प्रकट eternal हुआ। form manifests in Rasalila. बाकी जो स्वरूप प्रकट हुआ वो भक्त के भाव के So अनुसार प्रकट हुआ, other अपने mellows स्वरूप के appear अनुसार। according to the mellow of the devotees. ये एक अंदर की बात, एक होमवर्क दूं आपको। So let me give you a रासलीला का पहला homework, श्लोक सुखदेव a task. गोस्वामी, ये तो So the बहुत first सारे word of सैकड़ों श्लोक में ये कथा सुनाते हैं, Bhagavatam Shuddha, लेकिन although he रासलीला speaks की thousands कथा of का जब verses, ओपनिंग but किए ना, when he तो opens सुखदेव this के मुख से Rasalila, पहला शब्द क्या the निकला? first word भगवान that he spoke पिता is रात्रि, Bhagwan शरदोत्फुल्ल Apita Ratri. मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि, On लेकिन the night प्रथम of शब्द Sharad था Purnima, भगवान। the first word is Bhagwan. बताइए, ये श्याम So सुंदर tell कृष्ण me, ने ऐसा कौन this सा कार्य Shyam किया Sundar जो दूसरे ने has नहीं done किया? what no, ये others could भगवान not have चाहेगा, performed. मान लो मैं थोड़ा सा डिबेट If करूं, I आजकल ask, डिबेट का जमाना है। there is this era of debate. हमारे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया इसलिए वो So भगवान है, our गोवर्धन तो Krishna हनुमान had ने उठाया था। कौन सा बड़ा तीर मारा बताओ? lifted Govardhan, then हनुमान जी ने गोवर्धन he नहीं is उठाया the था, Lord. हम लोग नहीं सुनते। Has not Hanumanji lifted गोवर्धन तो Govardhan? कुंभज ऋषि ने भी उठाया था, Even Kumbhaj Rishi हमारे had भगवान नहीं, कृष्ण ने। carried. मतलब कम ज्यादा मात्रा में कृष्ण So ने in जो किया less वो or सबने किया, everybody सब लोग else has सब कुछ also कर done it. रखा है। So मान लो everybody कृष्ण has हजारों को done मारे होंगे everything. तो कोई 200 He has 500 killed को, thousands, मतलब but others might have बचाएंगे। killed 200, a few तो hundred. नेचर ऑफ बिजनेस वो तो सेम है The ना भाई। nature of कृष्ण ने business सब remains the किया, same. So किसी ने Krishna कम has लेवल done, में किया होगा, somebody has done लेकिन less and कृष्ण ने others, जो किया वो or Krishna सबने has कर done दिखाया। तो more, काहे but के everybody भगवान? has done. So how एक can we चीज कृष्ण consider को him to be भगवान Bhagwan? बनाती है, One thing वो that है makes रास him the लीला। Lord is क्योंकि रास Rasa लीला Leela, because रासेश्वर Rasa Leela, रसिक शेखर Raseshwar, कृष्ण के Rasik अलावा Shekhar, किसी की ताकत नहीं है कि nobody कोई else कर सके can या do किसी ने it की है। or बाकी can गोवर्धन do it. उठाना हो, किसी To को carry मारना or हो, lift काटना Govardhan हो, or to kill, सुदर्शन चलाना हो, मार पीट, ये तो सब लोग ने की, सब लोग करते हैं। many people can ये do भगवान that. को भगवान But बनाती है एक what लीला, makes the वो है Supreme रास Personality of लीला। Godhead, the Lord, हरे is कृष्ण। Rasa Leela. यहीं पर विराम करते हैं, हैं? So let's conclude कल here. रास के बारे में और अधिक सुनेंगे Tomorrow we आपसे। will भक्तों ने listen बड़े in धैर्य more से detail. You कथा all को have been listening श्रवण with किया, great patience. आप सभी भक्तों का धन्यवाद। I'm really विशेष thankful to all of धन्यवाद you. I really want to thank श्रुति माता जी, परेश Shruti भाई Mataji, और Paresh उनके Bhai, पूरे परिवार को, and the whole जिन्होंने ये family. सुंदर आयोजन किया। You have organized this बने beautiful रहिए, katha. इसी प्रकार से Please stay रास tuned रहस्य सुनेंगे, and जीवन listen को to the धन्य secrets करेंगे। of आइए Ras जय Leela, जयकार के and we साथ will इस make our प्रतिज्ञा life के सत्र beneficial. को विराम So, देते with Jai हैं। Jaikar, let's conclude the first day of the katha. जय श्रीमद्